Hi everyone, how are you all doing? We have got a passage here which is on the utility of a thing. So, as the first step, we'll glance at the passage. It makes it a use value, utility is not a thing, okay, exchange value. All right, corn and iron, commodities, fine. Okay, so I can see the entire passage talks about some commodities that are exchanged and utility value. Okay, questions कैसे हैं? Which of these is incorrect according to the passage? So false, true, true, true. I think there are 5 questions. The author is most likely to agree, except. So true, right? Most likely on agree on all. So true, true, true. And then there is one, sorry, false और ये है आपका disagree. So the author is most likely to agree. The author of this passage would most likely agree on all. So agree, right, ye and ye. Correct. Which of these statements are inconsistent with the passage? Is. So one is inconsistent. The others are true. True, 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 false. As you can see, बहुत सारे true false questions हैं. Tone and nature. ये पहले करेंगे. This is nice. And then we have got if you were to publish this article, which of these would you prefer? ठीक है, तो वो तो पैसेज पढ़ के पता चलेगा कि कहाँ पब्लिश करना है इसको. सो पैसेज का जॉनरा क्या है, पैसेज का टाइप क्या है, ये वैसा क्वेश्चन है. 5 ही क्वेश्चंस हैं इसके, इससे ज्यादा तो होने भी नहीं चाहिए. चलो, नाउ आई विल टेक यू ओवर टू द पैसेज. देखते हैं. द यूटिलिटी ऑफ अ थिंग मेक्स इट अ यूज वैल्यू, बट दिस यूटिलिटी बीइंग लिमिटेड टू द फिजिकल. ओके, क्या कह रहा है ये यहाँ? First para we need to read a little carefully without worrying too much about the time. The utility makes it a use value, but this utility is not a thing of air. Being limited by the physical properties, it has no existence apart from that commodity. Okay, so what he's saying is like it has properties, इसलिए उसकी utility है, and that's why it's limited. A commodity such as iron, corn or diamond is therefore, so far as it is a material thing, a use value, something useful. This property is independent of the amount of labor required. Okay, हमें उससे क्या मतलब? चाहे 150 लोग लगे हों उसको प्रोड्यूस करने में, it doesn't matter. If it is giving us this much value, हमारे लिए वही value है. When treating of use value, we always assume to be dealing with definite quantities such as dozens, yards or tons. The use values furnish the material for a specific study. Okay, use values reality, ठीक है. So in the first para he is talking about use values and जो physical से connected है, they also constitute the substance. In the form of society we are about to consider, they are the material dispositories of exchange value, ठीक है. Then the second para says what? Exchange value at first sight presents itself as a quantitative relation. Okay, proportion in which values, okay, hence exchange. थोड़ा सा skimming कर लिया यहाँ. Let us consider the matter a little more closely. Fine. Let us take 2 commodities, corn and iron. Proportions, whatever those, can always be represented by an equation. The 2 things, okay. So इसमें तो वो example दिया है 2 commodities का, that is corn and iron. So I'm not going to get into it like एकदम ज़्यादा deep dive. Then I'll take you over to the next one, which is again a big para. If then we leave out of consideration the use value of commodities, they have only one common property left, that of being products of labor. But even the product of labor has undergone a change in hands. If we make abstraction, तो अभी यहाँ क्या कह रहा है, अभी skimming अगर थोड़ी करते हैं, its existence, okay, neither can it longer be regarded, fine, along with the useful qualities we put out of sight, okay. बहुत ही वेग सा, बहुत ही डेंस सा पैराग्राफ है. तो इसको अगर आप पढ़ने लगोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, फिर आप ना नर्वस हो जाओगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है. So you should take it this way. The first line talks about what? If we leave out of consideration the use value, till now he spoke about the use value. अब अगर उसको ही छोड़ देते हो तो क्या फिर रह गया उनमें? They have only one common property, that of being products of labor.
हर चीज को लेबर ने बनाया है, दैट इज द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन दीज थिंग्स, राइट. So this para is talking about taking out the use value and then seeing क्या बच गया है उसमें and then discussing the product of labor, right. So labor की बात है यहाँ. Then we have seen that when commodities are exchanged, their exchange value manifests itself as something totally independent. But if we abstract, तो यहाँ पे exchange value की बात आई है, remains value, therefore the common substance that manifests itself as the exchange value is their value. मतलब पूरे में ना खाली वैल्यू 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 बकवास कर रखी है इसने. तो अभी लास्ट पैरा पे जाएंगे. लास्ट पैरा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं. A use value or useful article therefore has value only because human labor in the abstract has been embodied or materialized in it. All right. How then is the magnitude of this value to be measured? I see this question. ये मुझे पसंद आया, इसको पढ़ूंगी मैं. कैसे फिर मेजर करेंगे? आपने वो निकाल दिया तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपने सोचा कि अच्छा चलो यूज वैल्यू है, फिर वो हटाया आपने तो लेबर प्रोड्यूस बाय लेबर है, तो कैसे आप डिसाइड करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू? प्लेनली बाय द क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू. सो इसमें ना इस लास्ट पैरा में ही इज गिविंग सम काइंड ऑफ कंक्लूजन. The quantity of labor is measured by its duration, labor time, fine, standard, okay. The labor time necessaries that required to produce, okay. Again, he discusses something in connection with labor. Now, I'll give you one ज्ञान point here, guys. बहुत ही मुश्किल है ऐसा पैसेज को पूरा पढ़ के समझना. So, अभी जैसे मैंने दिखाया vaguely यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत, like if you just take the first line of every para and try to understand the main idea, only then will you be able to go over to the questions and give them some time. तो भाई ये पैसेज what was it talking about? Something about utility of value, utility of a thing. We call it use value. Okay, it's connected to its physical properties. In the first para, this is what he says, right? And then material dispositories, something connected with society. Second para talks about exchange value, quantitative relation, fine. And then the third para talks about a comparison between corn and iron, right? Then in the fourth paragraph, we see that they have come to something like labor, products of labor, right? पूरा उसका लंबा डिस्कशन है. नेक्स्ट पैरा में एक्सचेंज वैल्यू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज समथिंग टोटली इंडिपेंडेंट, एंड लास्ट पैरा में सम कंक्लूजन. दिस मच इज एनफ. इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, इवन आई कुडंट अंडरस्टैंड टू मच फ्रॉम हियर. और मुझे पता है कि अगर मैं 10 मिनट लगा के भी पढ़ूंगी तो भी मैं सिर्फ यूं गोल 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 गोइंग अराउंड द बुश ही होता रहेगा यहाँ पर. So, on the spot, you have to understand how to handle passages. Fine, on the spot बोले तो आपको पैसेज मिलेगा. Look at the questions and then you decide करना क्या. अभी इसमें जैसे 3 है ट्रू फॉल्स के, एक है टोन का, एक है जॉनरा या मतलब कहाँ आप इसको पब्लिश करवाओगे, ऐसा टाइप्स. I would like to start with the टोन वाला. फिर ट्रू फॉल्स वाले में से I would love to pick 2 questions, ध्यान दे करके कि कौन सा पिक करना है. तो अगर ऐसे पैसेज में आपने 3 भी कर लिया ना, और ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस में, तो काफी है आपका. ठीक है, चलो देखते हैं इसमें होगा कैसे. फर्स्ट वन. ओके, सो द टोन एंड नेचर ऑफ द पैसेज इज व्हाट? Tone, overall tone is taken from where? It's taken from the last 4-5 lines. He could have started on some tone, but what he ends on is important. ठीक है, अभी यहाँ ऑप्शंस कैसे हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, राइट? Now I'll take you back to the passage and tell you something. When you finish this passage or any passage, the first thing that you should ask yourself is he praising somebody? तब पॉजिटिव होगा. Is he criticizing somebody? तो नेगेटिव होगा. अगर वो सिर्फ philosophical हो रहा है और he is giving you comparison or he is kind of analyzing something, he is being descriptive, it is just neutral. Right? So go down to the last 4 lines. Standard, this, required, okay. I don't think he's criticizing. I don't think he's praising either. Right? So positive is out, negative is out. I'm left with this. Neutral and analytical. Now I'll tell you the meaning of analytical. Neutral तो आपको समझा दिया. Positive है, negative है, neutral है. Neutral है ये. Analytical is what? He compares things.
he like comes up with 2 or 3 points and he tries to look at those from various angles, and then in the end he tries to give some kind of a conclusion. That is called analytical. Analytical का एक और तरीका होता है. Analytical में like you can take up A and compare it with B. That kind of a passage is analytical. You can take A and compare A का pros and cons. You can see the plus and minus of A. That is again analytical. या जो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि analytical कैसा है. He is trying to take something. जैसे अभी यहाँ utility and value की बात कर रहा है. Then he takes it up from various angles. Labor से related, physical properties से related, और कुछ ना कुछ point लेकर के he is just trying to be analytical. हर angle से देख के. Then in the end he gives some kind of his perception, his point, like he's summing it up. Okay, so definitely this is analytical and the doability of this question was very very good. ऐसे ही आ जाए CAT में तो बस बहुत सही है. Now, would I like to do this question? ऐसा क्वेश्चन वैसे CAT ने दिया नहीं है अब तक, बट अगर दे देता है तो क्या करोगे? मैं इसको देखूंगी तो जरूर. And within 30 seconds I'll understand if I can actually attempt this. अभी चलिए हम साथ में देखते हैं. अच्छा नहीं होगा मैं आपको खुद बता दूंगी. If you were to publish this article, which of these would you prefer? Now, you're talking about utility. The whole passage is on commodity, society, commodification, commodities, कुछ ना कुछ इस तरह का utility अभी दिखाती हूँ आपको मैं. So it can't be pure philosophy. It has to be philosophy with practicality, philosophy with usage, with economics ऐसा types. A leading daily of your country. Now, a leading daily is what? A leading daily is something that the general public reads. आप इतना dense article, high level article leading daily में आप डालोगे, कौन पढ़ेगा उसको? Right, so leading daily of the country will be too हल्का for such an article. Eliminated. कैसा होता है मतलब लीडिंग डेली में भाई न्यूज या पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें डालोगे आप. ये जो है दिस इज ऑफ इंटरेस्ट टू फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, ऐसे टाइप. अ जर्नल ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्यों होगा? पॉलिटिक्स तो है ही नहीं इसमें. आई एम लेफ्ट विद दीज टू. ट्रेड यूनियन, क्यों ही होगा? सो द आंसर इज दिस एंड इट इज वेरी राइटली जस्टिफाइड. थोड़े से और हम ट्रिकी कर सकते थे ऑप्शंस, बट कोई नहीं. अच्छा क्वेश्चन है, अ मैगजीन ऑन इकोनॉमिक्स. आई विल टेक यू बैक एंड शो यू एग्जैक्टली कैसे इसमें कन्विंसिंग है ये इकोनॉमिक्स वाला. यूटिलिटी, व्हेन वी टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स तो क्या होता है उसमें? मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, बार्टर, एक्सचेंज वैल्यू, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, राइट? देन limited by its physical properties, and then he comes here and says consumption constitute the substance of all wealth. Depositories, exchange value, quantitative relation. You can check in every para. Economics related terms are given. Fine. So I agree with this particular answer. Yes. This is good. ठीक है? अभी I would like to go to 1, 2, ठीक है, 3 ट्रू है, ठीक है, सब में वैसे ही है, 3 ट्रू एंड 1 फॉल्स वाला, राइट? ओके. अभी मैं बताती हूँ आपको इसमें पिक कैसे करेंगे जो जल्दी होगा हमारे से. ये वाला आप देख लो पहले, ऑप्शंस चेक करो. वैल्यू, कमोडिटी डिफाइंड, ओके. डिस्कवरी ऑफ अ रिच माइन विल एनहांस द अमाउंट, ओके. All right. Now when I see this question 2, this is kind of an application question. How do I know that? यहाँ देखो आप, a rich mine, productivity of labor socially available, a particular amount of agrarian labor, productivity of labor in a society vis-a-vis. So this is like based on what the author is saying in the passage, you are picking up points. And you are kind of coming up with analogies based on that funda. ये हो सकता है, ठीक है? So the author of the passage would most likely agree on all these except we are looking for 3 true bhai and 1 F. This should be easy
or doable. I'll tell you why. Because the passage has like all general points: utility, 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 utility. Here you are going to look for one option that has maybe a trap. Okay, so let's look at the options first. The discovery of a rich mine will enhance the amount of labor congealed in a substance made out of that mine. Enhance what? The amount of labor put in a substance that comes from that mine. We can go to the labor para and connect. देखते हैं अभी. If the productivity of labor socially available for product increases, the value of the product falls. Productivity of labor socially available, this goes up, this goes down. ये भी चेक कर सकते हैं, हाँ. पर अभी हम सिर्फ एक रीडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस की टू गेट अ फील. यहाँ हम ढूंढ रहे हैं फॉल्स. If a particular amount of agrarian labor in favorable seasons is embodied in more units of the product than in unfavorable season, I can simply pick season वाला. कुछ तो कनेक्शन होगा तभी तो ये एप्लीकेशन है. If the productivity of labor in a society vis-a-vis product increases, productivity of labor, the use value of the product remains unchanged due to it. So, after reading the options, I understand very clearly that all are connected to the labor paragraph. I'm going to go back and give it like one quick read. चलिए आपको दिखाते हैं. अब आप यहाँ देख लो. यहाँ two things, okay, यहाँ तक तो नहीं है, right? The labor part comes here. We are going to read it together. If then we leave out of consideration the use value of commodities, they only have one common property, that of being products of labor. Labor ने बनाया है. But even the product of labor itself has undergone a change in our hands. हाथ में हमने लिया product, right? Product of labor has undergone a change. If we make abstraction from its use value, we make abstraction at the same time from the material elements and shapes that make the product a use value. We see it no longer a table, a house, a yarn. Okay, abstract बना दिया हमने उसको. Like we are not connecting it with the use value. Its existence as a material thing is put out of sight, right? Easy to understand sentence. Neither can it any longer be regarded as the product of the labor of the joiner. Oh, product of the labor of the joiner, the mason, the spinner, or this. Along with the useful quantities of the products themselves, qualities, we put out of sight both the useful character of the various kinds of labor and the concrete forms of that labor. There is nothing left but what is common to them all. All are reduced to one and the same sort of labor, human labor. So even the qualities of labor are removed. It just comes down to one thing, that it has been made by labor. किस प्रोडक्ट में कितना लेबर लगा, क्वालिटीज क्या थी लेबर की, हमें कोई मतलब नहीं है. Got it? So अब यहाँ पे आप नीचे इस पे आके देखो. Now he has talked about exchange value and something, and then in this again he goes to labor. Has value only because human labor is in the abstract has been embodied or materialized. Correct? तो ये दिया है. और अब मुझे ये लग रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं they will be connected with the conclusion. कुछ तो sum up किया है इसने. अब plainly by the quantity of the value creating the labor contained in the article. कैसे हम करेंगे? How will we measure? By the quantity of the value creating substance, labor है contained in the article. Quantity of the labor, right? The quantity of labor is measured by its duration. कितना labor लगा है? Not by the number of men, by the number of hours that were put in, and the labor time in its turn finds its standard in weeks, days and hours. The labor time socially necessary is that required to produce an article under the normal conditions of production, average degree of skill. बहुत clear है अब तो, ठीक है? So I take you back to this now. अभी देखो आप, eliminate कैसे होगा? हमने वहाँ क्या पढ़ा? We read this that it all depends on one thing, that is labor. तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था that says कि लेबर भी तो reduce, आप कोई कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है लेबर क्या था कैसा था. You are just saying कि एक commodity को if we make it abstract, what happens? उसका utility value हट गया, and then even the labor
that we connect with it. लेबर हमारे लिए, हाँ सब लेबर के द्वारा प्रोड्यूस्ड है, बट व्हाट क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी, तो कैसे मेजर करेंगे? द लास्ट पैरा सेज वी मेजर इट बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट गोज इनटू इट. एंड हाउ इज क्वांटिटी मेजर्ड? क्वांटिटी इज मेजर्ड नॉट बाय द नंबर ऑफ मेन बट बाय द नंबर ऑफ आवर्स, डेज, वीक्स, जो भी उसमें डला है. ठीक है. नाउ इसमें यहां हम ढूंढ रहे हैं अग्री and one false. So what is he saying? The discovery of a rich mine will enhance the amount of labor congealed in a substance made out of that mine. Just the discovery of a mine. I mean, if you discover a rich mine, it will enhance the amount of labor. No, he says in the last 3 lines, it depends on the number of weeks and days and जो कुछ भी उसने बोला है, the quantity of labor that goes into it. So how can just the discovery of a rich mine enhance the amount of labor congealed in a substance? थोड़ा सा doubt है मुझे इस पे, I'll keep it. If the productivity of labor socially available for a product increases, the value of the product falls. Right? The productivity of labor available, the value of the product falls. कैसे? ये लास्ट में आप जाके देखो, यहां कनेक्ट हो रहा है. क्या बोला है इसने? प्रोडक्टिविटी सोशली अवेलेबल. ठीक है, यहां देखो. How then is the magnitude to be measured? Right? Plainly by the quantity of the value creating the labor contained, measured by its duration, standards, weeks necessary, the labor time socially necessary. ये वाला पॉइंट है. Is that required to produce an article under the normal conditions of production and with the average degree of this. Right? And even here he was talking about the labor thing, but ये जो इसका conclusion है ना, जो इसका अपना point है, this is important. So, standards in this, the labor time socially necessary कितना है? Is that required to produce an article under the normal conditions of production, average skill. मेरा average skill है, उसके हिसाब से आपका कितना आवर्स चाहिए, कितना डेज, कितना वीक्स, जो इसने बोला है, आवर्स, डेज एंड वीक्स डाला है इसने. ठीक है. सो वी गो टू दिस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज स्किल है ना. एवरेज स्किल आपका, सुनो इसको इस तरह से, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आई एम कनेक्टिंग इट विद दोज लास्ट 2 लाइन्स. यहां पे, अच्छा इसको भी ना यहां पे लिख देती हूं मैं. लास्ट 2 लाइन्स में उसने क्या बोला? लेबर कैसे मेजर? ओके, hours, weeks, days, ये हो गया, इसने कनेक्ट किया. right? And then he says the productivity of labor is decided by what? Average skill. Correct? अब यहां बोला है if the productivity of labor increases, productivity of labor increase हुआ, average skill से ऊपर चला गया. So हमने assume किया कि ये जो इतना इसका वैल्यू हो रहा है कोई प्रोडक्ट का, that depends on the labor that was used. Labor was कितना, hours, weeks and days का, and हम ये assume कर रहे हैं average skill. अब अगर average skill को बढ़ा देंगे हम, increases, productivity increases, what will happen? Hours, weeks and days will go down. Correct? Hours, days and weeks will go down. Number of उतना से value decide हो रहा था product का. If they go down, the value of the product falls. You get the point? This is correct. Connected with the last 3 lines. मैंने आपको वो zone दिखाया जिससे connect करना है. Interpret फिर आपको वहीं पर के उसी के हिसाब से करना है. A particular amount of agrarian labor in favorable seasons is embodied in more units of the product than in unfavorable season. ये भी connected with that. Particular amount of agrarian, ठीक है, खेत पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में है, मतलब फूड ग्रोथ में है, एग्रीकल्चर में, एग्रेरियन लेबर इन फेवरेबल सीजन्स, गुड सीजन्स में ही विल वर्क मोर आवर्स, इज एम्बॉडीड इन मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैन दिस. राइट? सो ही इज वर्किंग मोर आवर्स, दैट गिव्स लाइक दैट प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट्स. तो फेवरेबल सीजन में उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ही इज एबल टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स है तो मोर यूनिट्स है than in unfavorable season. Unfavorable season में the units can go down, right? So this is application बोले तो you have to go with that theory and you have to apply and see if that can be applied. So here again this is true. He is likely to agree with this. ये देखो, if the productivity of labor in a society vis-a-vis a product increases, again here productivity increases,
प्रोडक्ट के हिसाब से, द यूज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू इट। अब यहां ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट, यहां देखो इसने वैल्यू बोला था, हियर ही इज टॉकिंग अबाउट यूज वैल्यू। प्लीज नोटिस द डिफरेंस। ओके, सो यहां इसने जब बोला था द वैल्यू, आई एक्सप्लेन्ड इट कैसे वैल्यू गिरा। यहां इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन अ सोसाइटी vis-a-vis अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट के हिसाब से वो इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ तो इनका नंबर ऑफ आवर्स चला गया डाउन, जितना उसमें गया प्रोडक्ट बनाने में। सो द एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ये द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द यूज वैल्यू? use value is connected to the physical properties, use value is not connected to the productivity of labor, so the use value of the product remains unchanged due to it, this is correct, right? And ये जो है आपका, this is false, so would most likely agree on all of these, agree, this should be your answer, because just the discovery of a rich mine will enhance the amount of labor congealed, नहीं, the number of hours has to enhance यहां बोला है ना, enhance the amount of labor, वो कैसे increase होगा? enhance the amount of labor तो तब होगा जब उनकी productivity increase होगी, right? productivity increase होगी तो उनका amount of labor down जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उनका अमाउंट ऑफ लेबर, मतलब एवरेज स्किल होगा तो अमाउंट ऑफ लेबर जो उसमें डला है वीक्स, आवर्स और डेज में, वो इंक्रीज होगा। दैट इज द कनेक्शन ही इज गिवन इन द लास्ट 3 लाइंस, राइट? तो जस्ट द डिस्कवरी ऑफ अ रिच माइन cannot affect this, so this is eliminated, this is your answer. So basically यहाँ पे आपको समझना है कि this was connected to that zone. Had you taken the entire passage and run around looking for the answer, you would have gotten confused. Got it, guys? So I hope this is clear. ठीक है, ये उनका फंडा है, उनकी थियरी है, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से जस्टिफाइड था ये। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस, Which of these is incorrect? ठीक है, एंड 3 ट्रू होने चाहिए। अभी तक तो बहुत समझ में आ गया, भेजा फोड़ भेजा फ्राई भी हुआ। The use value of a substance does not depend on the amount of labor at all. Use value at all तो भाई सही नहीं लग रहा है मुझे, एक्सट्रीम टाइप का हो सकता है, रेड फ्लैग, तो मैं इसको ऐसे रखूंगी। और ये भाई स्क्रिबलिंग शीट पे लिख लेना, मुझे तो बार बार देखना पड़ता है, मतलब आई रियली कैन नॉट रिमेंबर क्या था। अभी मैं जैसे यहाँ किया मैंने, अभी फिर यहाँ देखा, फिर वो कर रही हूँ, फिर यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। आप में से कईयों के साथ ये होगा, सो प्लीज डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। नाउ ये मैंने मार्क करके रखा, नहीं ये तो ना लेबर एट ऑल जाके देखना पड़ेगा। The exchange value of a substance is defined in terms of an abstract quantity dependent on labor. ये तो सही है, एक्सचेंज वैल्यू की बात की है उसने, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कैसे होगा, ब्रिंग इट डाउन टू लेबर। फिर वही जो बड़ा वाला पैराग्राफ यहाँ पे देखो, ये यहाँ देखो, क्वांटिटेटिव इसने ये बोला है, डूइंग विद दिस, ऑल राइट, और यहाँ तो इसने ये कंपेयर किया है, कॉमन प्रॉपर्टी ये लेबर का ये लेके आया, abstraction at the same time from the material elements, okay, this he connects to labor. So if we make abstraction from its use value, okay, so the exchange value of a substance is defined in terms of an abstract quantity dependent on what? Labor. That paragraph gives the connection. This is true. The value of a substance is defined by the amount of necessary labor time, value, not the abstract value, defined by the amount of necessary labor time at a particular unit of productivity of the society. The value of a substance, amount of necessary labor time, no. The value of a substance is defined by the used value, the utility, the physical properties of that substance. Then when you talk about exchange value, you connect it with abstraction. You first make it abstract. Abstraction then depends on what? Labor कितना गया है उसमें, सबको reduce किया आपने to the amount of labor that has gone into it. ठीक है, तो ये है. So this is definitely wrong. मुझे ऐसा लग रहा है अब इसके और इसके बीच decide करना है. The value of a commodity is defined by labor congealed in it, right? Now, the value of a commodity, again value, not abstract value, defined by labor, congealed. Do you see this point? अब यहाँ और यहाँ इन दोनों में you can get confused.
डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ नेसेसरी लेबर टाइम. अब ये भी तो डिफरेंस देखो ना. This is labor time and this is labor. This is congealed in it. That means the kind of labor that was used to bring out that substance, yeah, produce that substance. And ये labor unit at a labor time at a particular unit है. So between these two, this is definitely true. क्योंकि ये तो normal labor, general labor की बात कर रहा है. Value of a commodity by the labor. ठीक है. अब अगर ये एक चीज का ध्यान देना यहाँ, this and this are opposites, right? Kind of. The use of a value, the use value of a substance does not depend on the amount of labor at all. अब ये कह रहा है यहाँ the value, तो यहाँ पे ये difference है. ये use value की बात कर रहा है, you value की बात कर रहा है. I'll quickly go and check this. The use value of a substance does not depend on labor at all. Okay. Utility use value, not okay. Commodity such as this, use value, this property independent, ये देख रहे हो आप, ये तो ये तो फटाफट मिल गया हमें. Independent of the amount of labor required. He is talking totally purely of use value. ये true है. अब मैं इसको quickly ऐसे check करूंगी, भाई ये true है, definitely ये true है. Exchange value तो वही है, according to that big para. It's between these two, एक false होना चाहिए. Look closely for the difference. The value of a substance is defined by the amount of necessary labor time at a particular unit. ये तो last 4 lines में उसने बोला है. And labor time का इसने बोला है that's connected with abstract value. जो exchange value, abstraction of that commodity, use value हटा देते हैं, then we bring it down to abstraction. Abstraction में then we connect it to the labor that has gone into it. ठीक है? Defined by, तो the value of the substance नहीं है. That is the exchange value. So this is false, and this is like, you know, ये इसलिए true भी होगा. The value of a commodity is defined by labor congealed in it. This is overall general sentence कि ठीक है, value of the commodity, जब use value है, labor connected नहीं है. But when you talk about general value of a commodity, that is like ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें labor को consider किया, but abstract लाने के बाद फिर labor का productivity से connect करेंगे. This is basically ठीक है. So between C and D, it could have been a close call, but C is, I think, more apt as the answer. ठीक है. ये 1 हो गया आपका, 2 हो गया, explain कर दिया ये. Now the doability of all these 3 questions is good, but they are time taking. तो ये 3 आपका टारगेट नहीं होना चाहिए टेस्ट में. वो दोनों कर लिया हमने, 4th and 5th. ये तीनों में से आपका टारगेट खाली 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, मैक्स 2 क्वेश्चंस. एक भी कर लो अगर आप पूरा एकदम, you know, accuracy से, that's good enough. Which of these is inconsistent? False. Right. अब तो मतलब सारा वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू सब तो समझ में आ ही गया है आपको. Right. इसको देखते हैं. A thing can have a use value without having any value. तो use value और value का difference उसने दिखाया ही है. Use value is according to physical properties उसका, value उसका है according to labor, है ना? Then exchange value, abstraction and all. तो can have use value without this. This can be true. A thing cannot have a value without exchange value. आप इसको जाके exchange value वाले में देख लो. ठहरो, यहाँ बता रही हूँ. ये quantitative, right? Values, fine, relation, constantly changing. Exchange value appears to be something accidental, and this. That is inseparable. यहाँ. That is inseparably connected with inherent in commodities seems a contradiction in terms. Inseparable, inseparably connected बोले तो उसी चीज को इसने यहाँ पे rephrase किया है. Cannot have a value without this. So this is true. A thing can have an exchange value without a use value. Has value, a use value has value only because human labor has been embodied or materialized. So exchange value and use value are 2 different things. You get this from here, correct? Yeah. A thing can have an exchange value without a use value, right? ये उसके हिसाब से आपका rephrasing लग रहा है, ठीक है? We'll just keep this. The value of a social substance is manifested through its exchange value. So now it's completely between C and D. एक तो हमें false निकालना है. Both the options are slightly confusing. वापस चल के फिर देखते हैं. So the value of a social substance is manifested through its exchange value. Social.
through its exchange value. ठीक है, और ये कह रहा है a thing can have an exchange value without a use value. एक बार exchange value में भी देख लेते हैं. Okay, values is this, use value is here, exchange value is here. Can it have an exchange value without the use value? Presents itself as this, values this, a relation constantly changing with time and place, exchange value, consequently an intrinsic value, exchange value that is inseparably connected with, inherent in commodities, तो उसका physical value से connected है, seems a contradiction. Okay, the properties are exchangeable. Those properties may be represented by an equation. The two things must therefore be equal. Okay, each of them so far as it is exchange value must therefore be reducible to this. So use value and exchange value are somehow connected. ऐसा नहीं हो सकता है कि a thing can have exchange value without having its physical properties. तो उसका exchange value बनेगा कैसे? Right? This should be false और ये आपका true में चला जाएगा. ठीक है? Very confusing, I agree. बट थोड़ा सा अगर आपने फ्लो पकड़ लिया कहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू, जैसे पहले बिगिनिंग में यूज वैल्यू, देन एक्सचेंज वैल्यू, सोसाइटल, देन ही गोज टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें बड़ा पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, रेड्यूस करो उसको, सारा फिजिकल हटा दो, देन यू कनेक्ट इट ओनली विथ लेबर. लेबर बोले तो कितना लेबर उसमें यूज हुआ है, तो कैसे मेजर करेंगे? मेजर तब करेंगे, ऐसा मेजर कर पाएंगे व्हेन वी डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, डेज एंड वीक्स जो उसमें गया है, क्वांटिटी ऑफ लेबर. ये पैसेज का फ्लो है. उसके हिसाब से you can do these questions, but again I'm saying all 5 should not have been done from here, because doing all these questions will easily take you something like 10 to 12 minutes. वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. Okay, चलो, thank you everyone.